everyone, so let's move towards our today's topic, which is, as we all know, as a medical student, as we are going to be a doctor, or we are in a medical field, so we know that itis means inflammation. And we have discussed a very detailed topic about meninges. We know that meninges is a layer of connective tissues around the brain for protection, and there are three layers: dura mater, pia mater. First outermost layer is dura mater, then arachnoid mater, and the innermost layer is pia mater. The innermost layer, that is pia mater, and the arachnoid mater, they together called as leptomeninges. Okay, so in these two layers, that is arachnoid mater and the pia mater, if the inflammation is taking place, if there is an inflammation, that is called as meningitis. Okay, sometimes along with the meningitis there is another disease, there is another inflammation in the brain, that is called as encephalitis. So if both लाइक meningitis भी हो रहा है और उस बंदे को उसी वक्त ब्रेन में भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज meningoencephalitis. Okay, now there are some types. There are three types basically of meninges. Number one is acute pyogenic meningitis. It is caused by bacteria. Okay, the name of those bacteria: Streptococcus pneumonia, group B streptococci, Escherichia coli. Okay, and if there is a disease in some patient, if the patient of this disease is present, so what will be the cause? There will be headache, there will be photophobia. Okay, just wanna give you one information. अगर कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई डिसऑर्डर होता है, दैट इज़ मेनिंजाइटिस भी उसी का डिसऑर्डर है, ब्रेन का है ना, तो हेडेक तो लाजमी होगा, तो हेडेक तो इसका सिम्टम है. दैट इज़ अनदर थिंग इज़ फोटोफोबिया. फोटोफोबिया इज़ सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब अगर ज़्यादा लाइट उसके मुंह पे मारी जाए, उसकी आंखों पे मारी जाए, तो उसका सर दर्द हो जाएगा. ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट अनदर सिम्टम, दैट इज़ क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, दैट क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ लाइक कि हम कहते हैं ना, टीचर्स अक्सर स्टूडेंट को कहते हैं बी अटेंटिव, तो वो अटेंशन नहीं दे पाएगा किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस. इन दिस पेशेंट इफ़ वी डू CSF टेस्ट, ओके, लंबर पंक्चर के थ्रू हम CSF अगर निकाल के चेक करें लेबॉर्ट्री में, तो वी विल फाइंड के दैट देयर इज़ एन एलिवेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लूकोज लेवल रिड्यूस हो जाएंगे, और न्यूट्रोफिल जो लेवल है, यानी लिम्फोसाइट जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. सॉरी, लिम्फोसाइट तो दूसरे डिसीज़ में होते हैं. इस टाइप में जो है ना, लिम्फोसाइट नहीं, न्यूट्रोफिल जो ल्यूकोसाइट की टाइप है, WBC की टाइप है, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टाइप, दैट इज़ एसेप्टिक मेनिंजाइटिस. इट इज़ कॉज्ड बाय वायरल डिजीज़. नाउ when we were talking about the acute pyogenic meningitis, which is due to bacteria, I have told you some name of the bacteria. But in this case, in aseptic meningitis, which is caused by virus, so there is no एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर वायरस के फला वायरस जो है ना ये कॉज करता है. ठीक है, तो अभी तक इस पर रिसर्च मुकम्मल हुई नहीं है. बट इन दिस पेशेंट हाई प्रोटीन लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है, और लिम्फोसाइटोसिस यानी लिम्फोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं. लास्ट टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस इज chronic meningitis. The chronic meningitis, basically if the meningitis is persist for more than 1 month, what happened basically, there will be that will be declared as chronic meningitis, and this is caused by Mycobacterium tuberculosis. Okay, in this condition hydrocephalus occur. What is hydrocephalus? We have discussed in separate lectures, so you can listen that thing. But till that, this is all the whole topic regarding meningitis. Till then, work hard, study hard, and good luck. Take care. Bye bye. Thank you so much, and yeah, take care. Thank you.